यहाँ से देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी दिस वाज द वीडियो, दिस इज़ द फर्स्ट मोमेंट वी डस on the editing. This is how we edit this video and it looks nice in my opinion. In personal point of view, it looks really nice. And here we started pan and zoom effect, so it looks really nice in my opinion. And we uses a photo to move to the second video. नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ क्रिएट करने वाले हैं। लेट्स सी, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और देखिए कि काइन मास्टर में हम क्या बनाते हैं। हमें भी नहीं पता एक्चुअल में कि हम क्या बनाने वाले हैं, बट लेट्स सी क्या बन जाता है। ओके, विल डू दैट वन पार्ट एंड द सेकंड पार्ट एंड दिस वन विल बी कम इन मिडल। ओके, दिस इज नॉट नीडेड। लेट्स सी हाउ द फुटेज इज। ओके, तो ये फुटेज कुछ ऐसी दिख रही है। तो दोस्तों ये फुटेज कुछ ऐसी दिख रही है और ओके, काफ़ी अच्छी सी फुटेज है और ये फुटेज भी काफ़ी सही दिख रही है। एंड दिस इज़ द फ़ोटो। तो फ़ोटो तो बीच में आएगा इन दोनों के मिडल में एंड टाइम शुड बी लेसर। ओके, एंड ट्रांजिशन पहले ही अप्लाई कर लेने चाहिए सो दैट इट लुक्स नाइस। तो इससे दोस्तों क्या हुआ कि हमने एक फ़ोटो बीच में लाया और एक पे ट्रांजिशन डाला, तो इससे हुआ क्या है कि जो सेकंड क्लिप है उसमें हमें ट्रांजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखिए प्लीज़ फिर से चला के देखते हैं एंड देयर वी गो। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम और अगर कम कर दें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। लेट्स सी। ओके, टाइम विल नॉट लेसर देन दिस। ओके, एनीवेज, तो चलिए अब कुछ बेसिक करेक्शन करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट सेक्शन में आएंगे एंड कलर ग्रेडिंग करेंगे इसकी, या फिर कहें कलर करेक्शन करेंगे। देन सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें जो बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाले, जैसे कि ह्यू हो गया, लिफ्ट हो गया, गामा हो गया, गेन हो गया, शेडोज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके ओके, +7 आई गेस, +7। ओके, हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, एंड टेम्परेचर शुड बी लिटिल मच, saturation should be upper side and brightness ऐसी ही रहनी चाहिए। ओके, some correction we are done that. Now if you'll play it will look like this. Wow, it looks really cool I guess. Some basic correction be done. Okay, so यहाँ पे हमने इस फोटोज़ का बेसिक करेक्शन कर लिया एंड देन we'll do this footage. Then we will come in adjustment section. Saturation should be little upper side, temperature should be little upper side, and highlights should be lesser upper side, and shadows little bit down in this footage because the student is reading right now, so you have to, the footage should be look little natural I guess. That's why we does that. Okay, it looks really nice I guess. Now if you'll play, okay, it is lagging because आप जब कलर ग्रेडिंग करते हैं तो फ़ोन की थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। ओके, तो फुटेज यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है। सो बेसिक करेक्शन हम लोगों ने कर लिया है फुटेज का। देन आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कट्स वगैरह देने हैं। लेट्स सी, यहाँ पे एक कट दे देते हैं एंड Okay, so trim splitted playhead, one cut, and I guess here we'll make another cut that is splitted playhead, and one more like here and splitted playhead. Okay, 3 कट हमने दे दिया। इस क्लिप को हम लोग फास्ट कर देंगे, स्पीड एंड ओके, सो स्पीड शुड बी 8x। ओके, 2x से ज़्यादा नहीं सकती। एनीवेज, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ओके, सो इट गिव्स लिटिल बिट अ सिनेमैटिक लुक आई गेस। तो यहाँ से सिनेमैटिक लुक थोड़ा सा दे सकते हैं एंड यहाँ से इस क्लिप को भी थोड़ा सा हम यहाँ से कट करेंगे। लेट्स सी, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा कट करते हैं। लेट्स सी, देखिए थोड़ा सा लाइक इतना सा कट कर लेते हैं, इतना। एंड जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
ऑब्जेक्ट मूव करते रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग इसकी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, लाइक 4x आई गेस, 2x ज़्यादा नहीं हो सकता एनीवेज, फुटेज इज लेसर साइड, सो नाउ विल सी। Okay, so my phone is not handling well anyways. When we export this video, we'll see how this video looks like. Okay, so some basic corrections are done, and one more thing that I could say, the big net should be on in cinematic videos because it is important, you know, this by mistake will exported ideas, so yeah, so by mistake we'll done that. So यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बिग नेट को थोड़ा सा ऑन करना है, एंड या इट लुक्स लिटिल सिनेमैटिक लुक आई गेस, सो ये होना चाहिए। यहाँ पे एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पे आके हम इसका क्लिप को प्लेट से स्प्लिट करते हैं, देन वील हेयर एंड वील रिवर्स दिस वीडियो। ओके, इट विल टेक टाइम एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर फोन्स प्रोसेसर, सो इट विल टेक टाइम that much. That's how your processor is performing. So okay, now all clips are done. Now we'll see how it looking. Okay, so let's play. Okay, oh wow, this looks nice transition I guess. So okay, तो यहाँ पे और कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, रोटेट मिररिंग भी कर सकते हैं सिनेमैटिक वीडियोस में। जब हम इसको बैक ला रहे थे, रिवर्स जहाँ पे करा है पिक को, वहाँ पे हम इसको रोटेट मिररिंग करिए और इसको रोटेशन लाइक हियर, एंड आई गेस मिररिंग बेहतर ऑप्शन नहीं है, सो आई गेस इट लुक्स नाइस। नाउ आई विल प्ले इट, कीप द फेक, एक फेक आइडिया देता है कि पर्सन इज कमिंग इन टू द कैमरा, सो या okay, so pan and zoom and start from here, like okay, close this, start end point should be here. Okay, now we'll see how it looks here. Okay, now we'll play how it will look. देखिए, it will come to the objection at the camera and the second object is working on. So this is how you could edit some basic correction in this editor. This is called KINEMASTER, and it is a lovely editor in my opinion because it's so easy, so you don't have to learn a lot. The tutorials is out there on YouTube. We'll export this video around let's see 15 MB. Okay, save this, and it will, I am using free pack, and I guess free is okay. To see how the video comes out, edit करने के बाद वीडियो का लुक कैसा हुआ है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं. Now you can see this was the video. This is the first moment we does on the editing. This is how we edit this video, and it looks nice in my opinion. In personal point of view, it looks really nice. And here we started pan and zoom effect, so it looks really nice in my opinion. And we uses a photo to move to the second video frame, I guess, and the student is studying. So this is how we edit this simple video in KINEMASTER in Android smartphone. तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों. वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद.